गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्काई स्कैपर बिल्डिंग स्टैड प्रो की मदद से। बिकॉज़ हमने बहुत सारी ट्यूटोरियल्स अभी कर ली है तो हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे। तो हम सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। इसमें हम स्पेस ऐड करेंगे एंड हम इसको एक नाम देते हैं, समझिए स्काई 1। एंड इसका लेंथ यूनिट्स मीटर में एंड फोर्स यूनिट्स किलो न्यूटन में। And then next, and then we'll add a beam and finish. तो हमारे स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हम ज्योमेट्री में जाएंगे। ओके, ज्योमेट्री में रन स्ट्रक्चर विजार्ड से स्ट्रक्चर इंसर्ट करेंगे। ये एक स्काईस्क्रेपर है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फ्लोज होंगे उसमें। तो बहुत सारे फ्लोज मतलब हम 40 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेम मॉडल्स ले लेते हैं एंड बे फ्रेम पे डबल लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे लेंथ, हाइट, विड्थ एंड नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ, हाइट, विड्थ हमको डिफाइन करना है। तो मैं लेंथ एंड विड्थ 21 ले लेता हूँ एंड फ्लो टू फ्लो हाइट 3 ले लेता हूँ। एंड क्योंकि ये 3 फीट है हम वहाँ पे 1 मीटर लेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, आपके इसमें 3 मीटर डाल देना। ओके, नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ 7, नंबर ऑफ बेज अलोंग विड्थ 7 एंड अलोंग हाइट इज़ 1 एंड अप्लाई। तो देखिए मेरे पास ये फ्रेम स्ट्रक्चर आ गया है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो फाइल में जाके मर्ज मॉडल विद स्टैड प्रो कर दूंगा, और आई डायरेक्टली क्लोज इट एंड देन यस एंड विल टेक 0 0 0 ऑन XYZ एक्सेस एंड ओके। तो हमारा ये फीट में था इसलिए थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर आया है। हम कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। हम इसके फ्रंट व्यू में जाएंगे एंड विल सिलेक्ट द टॉप बीम्स। ओके, एंड देन विल डू ट्रांजिशनल रिपीट in y direction, total 9 steps and spacing is 1 meter because वो 3 feet थी and will link steps and okay। तो हमारे स्ट्रक्चर कंटिन्यू होना चालू हो गया है। ओके, तो देखिए ये बन गया हमारा 9 स्टेप्स। अब इसके टॉप स्टोरी में जाएंगे हम। टॉप स्टोरी की बीम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू व्यू। ओके, एंड देन डिस्प्ले द व्यू इन एक्टिव विंडो। ओके, तो हमारे पास ये आ गई है। हम इसके टॉप व्यू में जाएंगे तो टॉप व्यू में देखिए ऐसे दिखता है। हम बीम कर्सर लेके अंदर की बीम्स सिलेक्ट करेंगे तो ये बीम सिलेक्ट हो गई है। हम वापस डिस्प्ले होल मोड में जाएंगे, देन ट्रांजिशनल रिपीट इन वाई डायरेक्शन, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 10, स्पेसिंग इज 1 मीटर एंड विल गोइंग टू लिंक द स्टेप्स एंड देन ओके। तो हमारे ट्रांजिशनल रिपीट चालू हो गया है। Okay, after transitional repeat again we'll go to front view, we'll select the beam sets of top floor, again right click and new view. In new view display the whole view and then okay, right, and then we'll go to top view. Okay, in top view we'll select the beams इनसाइड पार्ट ऑफ। ओके, एंड आप देख सकते हैं मेरा कर्सर अटक चुका है स्क्रीन में। आई एम सॉरी फॉर दैट, सम सिस्टम प्रॉब्लम्स। एंड देन विल गो टू होल स्ट्रक्चर, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर एंड ट्रांजेक्शनल रिपीट। ट्रांजेक्शनल रिपीट इन वाई डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ स्टेप स्पेसिंग इज़ 1 मीटर। नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे 3 मीटर लेना था लेकिन मैंने फीट में बना दिया इसलिए 1 मीटर ले रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे हम 10, लिंक स्टेप्स एंड ओके। ठीक है, ये ट्रांजिशनल रिपीट हो रहा है। अगेन विल गो टू डू द सेम प्रोसेस। नाउ विल टेक again the top story and new view and display the view in new window and top view, and then we're going to select the beams over here, again display the whole structure and transitional repeat.
in y direction, number of steps 10 and ये link steps and OK। तो हमारा देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम एकदम नीचे फ्रंट व्यू में जाएंगे। फ्रंट व्यू में जाने के बाद इसकी आपको एक ग्राउंड फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर वाला है ना बीम, ये सिलेक्ट करना है। ओके, देन विल गो टू न्यू व्यू एंड डिस्प्ले न्यू व्यू। ओके, एंड देन टॉप व्यू। टॉप व्यू में हमें यहाँ पे प्लेट्स क्रिएट करनी है, तो विल क्रिएट अ प्लेट्स फ्रॉम हियर and this point, we'll create a plates from here, 4 node plates, this point, then to this point, then this point, and at last this point. So we had created a plate. We'll select the plate from plate cursor, we'll select this plate and we'll go to display whole structure. Okay, the plate is selected. Will transactional repeat to that plate in y direction in 1 meter distance, and number of steps is 9 and link steps, no, we don't have to link steps, and then OK। तो हमारी ये प्लेट्स ट्रांजेक्शन रिपीट हो रही है। देन विल गो टू फ्रंट व्यू एंड देन विल सिलेक्ट द बीम्स ऑफ दिस लेयर। You can see over here I had selected this, select it very carefully. You don't have to select the columns overhead. Okay, I had selected this. Again right click, new view, display, and then OK. Then we'll go to top view and we'll add again 4 nodes plate. First this point, then this point, then the third point, and then the fourth point. So plates are added. We'll select this plate and then go to whole structural view, and the plate has been selected. We'll transactional repeat this plate in y direction, and default spacing is 1 and number of steps is 10. We don't have to link the steps, and then OK। हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हम फ्रंट व्यू आएंगे। हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेट बन चुकी है, तो हम ये जो एक्स्ट्रा प्लेट बनी हुई है हम इसको डिलीट कर देंगे। ओके, एंड देन हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट सेकेंड। नाउ इट्स टर्न ऑफ थर्ड वन। ओके, विल सिलेक्ट दिस बीम्स। ओके, select it very carefully, right click, new view, display whole structure in same window, in the active window, and here we'll add 4 noded plates, point number 1, point number 2, point number 3, and point number 4. And then we'll select this plate and view whole structure, transitional repeat in y direction in 1 meter spacing, total number of steps 10, do not link the steps, and then OK. So here the plate has been transmitted, transactional repeated, the paste, and then we'll go to front view and see that an extra plate has been created over here. Okay, again the plate cursor, and we'll select this plate, delete, OK, OK, OK. Then to this last one we'll again select this part, right click, new view, and then display, OK, top view, and then we'll create a plate from this cursor to second point, third point, and fourth point. We'll select the beam, we'll select the plate, display whole structure, transactional repeat, y direction, number of steps is spacing is 1, steps are 10, do not link the step, and then OK.
and then and finally we'll go to front view because one plate has been generated extra. Okay, we'll delete this. Okay, yes. Now we'll go to general view, general menu. Okay, there we'll add property, then we will define property. I am taking same size for beam as well as for column for my easy designing. You can take different sizes. Okay, I'll take here 0.23 meter by 0.23 meter size of beam and column and close, and then I'll assign for beam, select no, we'll go to select for assigning beam, select beams parallel to X and select beam parallel to Z. Here the beams will be assigned. Okay, for assigning column we'll go to again select beams parallel to Y. So columns will also assign. Okay, so we'll go directly to assign to view and then assign, and yes. Okay, all the members, all the beam and column elements will be assigned over here. You can see that thing. Okay, and then we'll again go to property. We'll add thickness to the plates. We'll add a thickness of 0.2 meter, add and close. Okay, thickness, again you can go from plate cursor and select whole plates, or you can directly go to assign to view and assign, and yes, the whole plates will be assigned automatically. Okay, then we'll go to give the support. Support will create a fixed support, add, and then we'll go to front view. We'll select the nodes of bottommost part. We'll select the support. We'll assign the supports to the selected nodes. Okay, assign, yes. Okay, the support is assigned. Then we'll go to load and definition. Because it's a skyscraper building, different types of load will act on it, like wind load, dead load, live load. So in general I will take live load and dead load only, and will not consider wind load in this case because the video will become too lengthy. If you want to learn the wind load part, you may refer the water tank video. Okay, so we'll go and add dead load and add, and live load and add. Okay, हमने यहाँ पे पैरामीटर्स डिसाइन कर दिया है, add and close. In dead load we'll add the self weight. Okay, in dead load we'll add the self weight, add, close. The self weight will be assigned to view, assign, yes. In live load we'll add floor load. We'll go to floor load. I'll add of -3 kilonewton per meter square in Y range direction, and minimum and maximum we'll check it out. We'll go to node cursor, we'll go to the lowest mode node, double tap on that thing. The lowest node is Y 1 meter. Close. We'll go to topmost node, we'll select that and double tap on that, 39.914. Close. Minimum will write 1 meter, and in maximum will write 39.914. Okay, my mouse had been stuck.
excuse me for a minute. Okay, so we'll add over here and then close. So हमारा dead load and live load has been added. Then we'll go to load case details and add some load combination. We'll generate it automatically in IS codes, using IS codes, and generate loads and then add and close. We'll go to print and analysis, and we'll add a print with no print, close, analysis, run analysis, save the structure, and the analysis is running. Will have to give us 0 error. If error came, then we need to resolve it going to output file. Okay, and let's see what happens. Okay, the analyzing being done, and we had done with analysis. Now we will design this building. Okay, we'll go to design part. We'll design it for concrete, and IS code is 456 Indian IS code. We'll select parameters and we'll take FC and FY main. Okay, and then we'll define the parameters. In FC we're taking 30,000 add, and FY main we'll take 500,000 add and close. In commands we'll add beam command, we'll add column command, we'll add slab and element command, and then take off, close. So we'll assign these to view. Okay, assign to view, yes. Then FI main, assign to view, yes. Then design of beam, we'll take a beam cursor, we'll select the whole beams, assign, yes. Oh, sorry. In beam cursor we need to select the beams, only beams, not columns. Here we have selected the column also. We are not giving the property that we could select the whole at once. Okay, select beam, unselect this, select beams parallel to X and beams parallel to Z. Okay, then assign and yes. Okay, after assigning these, will assign to column. To assign to column, will select beams parallel to Y direction. Again in select, go and take beam parallel to Y direction. Okay, and assign yes. In element, design element part, will select the plate cursor, and we are selecting this plate cursor and selecting the whole structural. So all the plates over here are selected, and then assign yes. Okay, then we'll again go to analysis and print, add, close, and analysis, run analysis, save. So our analysis is running out, and we'll see if error comes, we'll resolve it. If it doesn't, we'll go to post processing mode and see the different kinds of stresses on the plates. Let's see what happens. The design is almost done. Okay,
warning numbers are increasing. The structure have 40 stories, that why it takes a little much time. Don't panic, it will take some time. And here we had done it. Okay, then we'll go to post processing mode and then done. We had entered the post processing mode and then OK, and we'll see a structure, and this is a 3D model. We can see the axial shear stress on the structure. You can view it. We could see the shear stress. Are you able to see that shear stress is the blue lines on the structure? You can see it if I could zoom it for you. Yeah, see this. These are the shear stresses developed in the structure. You could see now more clearly, right? If I go to front view, you'd see that more clearly. Okay, if I'm not wrong. Yeah, these are the shear stresses developed in the structure, the shear force diagram. Okay, we'll close this. This is the axial diagram of the structure. We'll close this. This is the bending moment diagram of the structure. Okay, you could see that. We'll close this also, and we'll see the stresses in plates. The structure will deform in that way. We'll take a load combination, maximum absolute, apply, and then OK. So here is the plate. You could see that thing. Okay, here's your plate, and we'll do some animation part. Deflection. ओके, आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन इसका, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा. ओके, हम वापस पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे. यहाँ पे हम प्लेट्स के स्ट्रेसेस एक बार देख लेंगे. मैक्सिमम एब्सोल्यूट पे आप किसी पे भी देख सकते हैं, एंड देन ओके. तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. हम 3D रेंडर व्यू भी देख लेते हैं इसका साथ ही साथ में. It's loading, and here we go with the 3D rendered view of a structure. Okay, we'll just get this part a little nearer. Okay, and a bit closer. With the help of zoom key, you can just zoom it, or dynamic zoom. Yeah, you can see the structure now. Okay, the structure is visible. You can just move the structure with left key. The pink one is the plates, and the blue one is the beams and columns, the rectangular sections. Okay, so here we go, and these are the stresses on plates. The different colors shows different magnitude of stresses. Okay, and here we end the lecture. We'll just with the magnitude just zoom it out. Okay, so thank you guys for watching my video. If you like my video, please share, subscribe, and like it, and comment it,
एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइक। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप चाहते हो मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊँ तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जैसे वो भी इससे फ़ायदे में आ सके। ओके, थैंक यू सो मच।